As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 20th September, and this is Wednesday, and we are here with the Hindu analysis of 20th September. So if I'm audible, just write in the comments, yes sir, you're audible. Okay, so basically, on the first page, this is an article, we have discussed it yesterday also. India denies any role in 𝗟𝗲𝗀𝗃 killing in Canada. We have discussed it. Then here is an article, government introduces women's quota bill in Lok Sabha. PM calls for a consensus. So these are the things. ये वाला हम लोगों ने कल discuss किया था. Actually, this was an article, we discussed it, that Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, had said that they will investigate Indian government's link into killing of Khalistani activists and all. So he expelled the Indian diplomat, and that is why then, of course, the Canadian ambassador or Canadian diplomat has also been asked to leave and all. I hope you are aware of these things. And this is the statement given by India. ये मैंने कल discuss कराया था in yesterday's class, that India has given the response on what the PM Trudeau has said and all. So that is what the said, we reject the statement given by Canada's foreign Prime Minister and Foreign Minister and all. So these are the things we have discussed it yesterday. Yes. So India denies any role in 𝗟𝗲𝗀𝗃 killing. ये इसी में है actually. तो from here actually the article has been taken. So India on Tuesday rejected the Canadian allegation of involvement by government of India in the killing of prominent Khalistani activists and all on Canadian soil. So it was in June that Khalistan Tiger Force Chief 𝗟𝗲𝗴𝗪 𝗟𝗃 was gunned down by unidentified assailant in Surrey City of Canada. So कोई शहर होगा Surrey City, वहाँ Canada में he was actually killed and all. So just have an idea about that. Okay, now यहाँ पर एक आर्टिकल थे, US deeply concerned. Okay, so now USA ने भी कुछ इशू किया है, मतलब it said actually that regarding a potential link between the agents of government and murder of Canada's 6 separatist leader and all. So they said it is critical that ... the perpetrators be brought to justice and all. मतलब deeply concerned है, मतलब आप समझो उसका क्या मतलब है. So of course means, so they have given actually a sort of a vague statement, not very clear. तो मतलब deeply concerned, we are deeply concerned with that and all allegations and all. आप समझ लो. खैर, okay, now ये चीज काफी न्यूज में थी, that called as 5 eyes. So that is why I'm asking this question, what is 5 eyes in the news recently? Your option are Security Agency of Canada, Intelligence Agency of 5 Nations, Intelligence Agency of Canada, High Commission of Canada in Delhi. Your time starts now. बताइए. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. 5 आईज जो कि न्यूज में क्या चीज से रिलेटेड है? प्लीज टेल मी. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. यस, हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है. आई मीन दिस इज इन द न्यूज, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग इट. नो वन इज गिविंग रिस्पांस. यस, yes, Gauri Sethi, Pranjali, Jatin, Priya, Zoya Khan, Yash Gupta. So B is the right answer. Intelligence Alliance of 5 nations. Actually this is the 5 nations: Australia, Canada, New Zealand, UK and US. तो ये 5 nations का grouping है. ठीक है, आप देख सकते हो. So here is US, this is Canada, this is UK, and here you will find Australia and New Zealand. So they have made their intelligence alliance, जिसमें Canada भी है. Okay, so means it is coming in the news because the 5 Eyes Intelligence Alliance backs Canada probe in 𝗟𝗲𝗀𝗃 killing. So जो 5 Eyes Intelligence Network यानी बाकी जो 5 countries का है ना, which includes Canada as well. So they have supported that Canada should probe the 𝗟𝗲𝗃 killing and all. Khalistani leaders killing, Canada's evidence and its 5 Eyes Alliance frame India's challenge and all. So ये इस तरह की Indian Express में भी आर्टिकल आई थी. That is why you should be knowing about it. ठीक है. So yes, हाँ, yes. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. ओके, दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड इट. जैसे हाई कमीशन ऑफ कनाडा होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाई कमीशन, अनदर इज कॉल्ड एज एम्बेसी. एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या फर्क होता है? आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस. बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी एंड हाई कमीशन? ओके, मैंने बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो वहां पर मैंने बताया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में. So if someone is a part of Commonwealth nations, so they exchange High Commissioner instead of Ambassador. So the word High Commission is used. है ना? I hope you are aware of that. I have discussed it in the paid classes. Okay. Yes. Now. Yes. Government introduces women's quota bill in Lok Sabha. PM calls for consensus. So this is a new bill. I mean, new parliament. So new parliament is there and all. Yes.
Okay, yes. So now the question is, Women's Reservation Bill is dash Constitutional Amendment Bill. Your options are 126, 128, 131st, 132nd. What is the right answer? Women's Reservation Bill is dash Constitutional Amendment. ये आज के पेपर में था, फर्स्ट पेज में. Yes, Zoya Khan, Priya Chavan, Pranjali, Nandana. Yes, 128th. Yes, Nandita Gauri, you all right. So 128th Amendment Bill is actually the Women's Reservation Bill, but it will be implemented after 2026 delimitation. यानी अभी नहीं implement होगा, ठीक है? Even if it is passed. तो क्या आपको शायद पता होगा that all India delimitation has been freezed in 2012 till 2026. 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है. पहले 1976 में फ्रीज किया गया था. Since 1976 till now the delimitation at the stage for MPs are actually fixed, and now it has been extended till 2026. ठीक है? Was extended till 2026. So after 2026 it will be decided. So once the census has to be done, देखो हर 10 साल में census होता है ना. So 2001, then 2011, then ideally 2021 में it was supposed to happen, but till now it has not happened. तो पहले सेंसस होगा, है ना, देन ओनली आफ्टर 2026 इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. तो सबसे पहले तो सेंसस होना बाकी, उसी के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. यस, डिलिमिटेशन आर्टिकल 82. वेरी गुड प्रांजलि. हाँ, गुड. ओके, नाउ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विल नाउ बी कॉल्ड एज इंडिया हाउस, भारत हाउस, संविधान सदन, विक्टोरिया हाउस. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को क्या कहा जाएगा? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस. वी आर सीइंग ओनली 9 लाइक्स. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वो भी फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था. यस, नंदना, प्रंजलि, प्रिया चवन. यस, द राइट आंसर इज संविधान सदन. कुमकुम. यस, जिन्होंने भी सी आंसर किया, गौरी, जतिन, यश, जिया राव. तो यहाँ लिखा होता है, द शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड Parliament House, now called as Samvidhan Sadan, to the new Parliament building took place on Tuesday amid a call by PM to start a new chapter and all. इसका नाम संविधान सदन हो जाएगा. And this is the new Parliament actually. ठीक है, so just have an idea about that. Okay, yes. Now let's ask another question. Hoysala temples are found in which state? Your options are Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Assam. Because 3 Hoysala temples are now added in UNESCO World Heritage Site, है ना? अभी न्यूज में था. That is why I'm asking it. Which state? बताइए. Anyone? Yes, it's in the state of Karnataka. B is the right answer. Yes, Nandana, Priya, Nandita, Gauri, you all right. 3 Hoysala temples declared World Heritage Sites. आप देख सकते हो Hoysala temples at Belur, Halebedu, Somanatapur. सब ये all these places are actually in Karnataka. ठीक है. Were declared UNESCO World Heritage Site on Monday in a move that will bring global recognition with prospects to increase international tourism and all. So Chennakeshwar temple at Belur, Hoysaleshwar temple at Halebid, both in Hassan district is in Karnataka. ठीक है. Have been added on the UNESCO's tentative list since 2014. 2014 से tentative list में थे. The Keshav temple at Somanathpur in Mysuru district, Mysuru is also in Karnataka, was appended to the other 2 monuments and all. And all three were officially nominated by the center and all in February and all. ठीक है, last year. So Hoysala temples, okay, you will find it from Hoysala empires, 11th to 14th century, Karnataka, state of Karnataka and all. Yes, so you should be knowing it. देखो ये तीनों, Chennakeshwar temple, Hoysaleshwar temple and Kesawa temple. ठीक है. So इसी में an expert from the International Commission on Monuments and Sites concluded a site visiting covering all the 3 temples in September last year and all. ठीक है. So this was actually decided in 45th session of World Heritage Committee at Riyadh, Saudi Arab. तो ये देखो उनकी यूनेस्को के वेबसाइट पर लिखा हुआ है. If you see it carefully, देखो रियाद है ना, रियाद is the capital of Saudi Arab, where actually this World Heritage Committee was done. ना देखो ये इसकी फोटो वगैरह है. ठीक है, तो देखो 11 सितंबर का न्यूज है ना. So go and read it if you are interested. थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, because you should be knowing about it, है ना. So now let's talk about All India Open Mock. So from 22nd September till 1st October, we'll be having an All India Open Mock for CLAT. So do attempt it. That would be very, very beneficial for you.
And then we'll be having a workshop. So download our app, go to CLAT section on 24th September at 6 p.m. We'll be having a workshop with Nivedita ma'am, how to get an NLU call in CLAT 2025. So 24th September, 6 p.m. याद रखिएगा. Okay, now let's start with the editorials. The mantra that powered success at the G20 summit. So actually, क्या mantra था? That is what is being talked about by Suhasini Haider. So she said the reports of the death of multilateralism are greatly exaggerated. मल्टीलैटरलिज्म मतलब होता है जिसमें डिफरेंट ग्रुपिंग्स हो, मतलब मोर देन वन नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग है ना, मतलब मोर देन 2-3 नेशंस. ठीक है, G7 G20 ये सब मल्टीलैटरलिज्म है. So some people have said that the multilateralism is dead, but she is saying कि no, it is exaggerated. ये बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है कि मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो गया है. मतलब she is saying कि it's there, of course. So we have seen the G20 summit and all, the New Delhi declaration was signed. हम लोग New Delhi declaration भी discuss किया. Then she is talking about Sherpa. कौन थे Sherpa? Who is the Sherpa from India's side? Can you tell me in the live chat? Then of course we talked about the subject of Ukraine and all, है ना? Ukraine war के बारे में बात हुई. But yes, the Russia name was not mentioned. But yes, the Ukraine term was mentioned and all. In the past year, Prime Minister Modi visited Japan, Australia, US, UAE, France, South Africa, Indonesia. So these are the places he visited, है ना? So these are the things you should be knowing it. To look more broadly, it is India's political mantra of multilateralism, multipolarity in the middle way that won the day at the Bharat Mandapam and all. ठीक है, so middle way यानी middle path, multilateralism यानी different, multipolarity मतलब more than one power, है ना, polar world and all. Yes, Mr. Amitabh Kant is the Sherpa. Very good. Many people have answered. To begin with, it is clear that the desire to support multilateralism is what drove the concession made in order to achieve the consensus at G20. And multilateralism को successful बनाना है. The Western Bloc comprised of G7 countries. The European Union and US allies, Australia and South Korea made the larger part of these. तो ये पहले actually G7 से ही G20 बना है, फिर G7 में कुछ और countries add कर दिया गया, then it became G20, right? So that is what is being talked about. ठीक है, the only mention of Russia in the statement was a positive one, Black Sea Grain Initiative. Yes, when I was talking Delhi Declaration, I talked about Black Sea Grain Initiative. मैंने बताया था कि it was from July to July, last year July to this year July, है ना, कि it will allow Ukraine to export its grain to Africa and other countries and all. Yes, it was brokered by Turkey and United Nations. इसमें mention भी था कि they praised Turkey and United Nations in that Delhi Declaration, right? So that is what is being talked about. In public statement, Western Bloc leaders and officials denied a climb down, although proffering at the preservation of G20 and all. हाँ, the climb down मतलब ये सब बता रहे कि ऐसा नहीं है कि मतलब multilateralism is still there and all. ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है. Now it includes the G20 itself includes Western Bloc. Western Bloc मतलब होता है जो Western countries है ना. So the G7 countries and all, US, Canada, European countries. At the same time, Russia, China also. And at the same time, those who were non-aligned countries. Non-alignment एक movement था, आपको पता होगा non-alignment and all, है ना, from second Cold War, in the Cold War era, means it was led by India, where India decided not to join either of the two blocks, है ना. इसमें आपको G20 में सारे तरह के लोग मिलेंगे, वेस्ट वाले भी मिलेंगे, रशिया चाइना भी मिलेंगे, एंड NAM वाले भी लोग मिलेंगे, है ना. Yes, so these are the things being talked about here. ठीक है, so the last group is made of countries that do not approve the Russia war and all. So ठीक है, यही सब चीज वो बता रहे हैं कि I mean, if New Delhi failed to find the consensus at the G20, the fear was that G20 itself would become fragment and all. अगर फाइनल कंसेंसस यानी दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं साइन हुआ होता तो हो सकता है G20 खुद बिखर जाता, फ्रैगमेंट मतलब स्प्लिट कर जाता. Okay, so possibility to the G7, Western Bloc and BRICS etc. block and all, है ना. तो हो सकता है G7 टूट जाता है इधर और ब्रिक्स अलग फिर टूट जाता है, G20 का हिस्सा बन जाता है, then perhaps, I mean this is a guess. Okay, but yes, fortunately the final consensus happened and all. ठीक है, it was equally significant that it was troika combined and all. तो एक्चुअली क्या होता है, इसको ट्रोइका कहते हैं. ट्रोइका means the current president of G20, the previous president of G20 and the upcoming president of G20. तो G20 के कोई secretariat नहीं होता है, there is no secretariat of G20. So these three nations work combined together. ठीक है, इस तरह से लोग वर्क करते हैं. ठीक है, yes. Okay, then Indonesia is the ASEAN group chair, है ना. So ASEAN की जो one of the heads में से इंडोनेशिया आता है. South Africa is BRICS chair. इस बार BRICS chair South Africa के हाथ में था. आपने सुना होगा, I mean just before G20 summit, PM Modi visited Indonesia, East Asia summit हुआ था, where he visited, है ना. Then BRICS chair is in the hand of South Africa, and then multilateralism have added to their efforts. Japan too, as G7 chair, played a key role in bringing US and Europe on board, है ना. So that is what is being talked about and all. ठीक है. Eventually, the outcome of strength that G20 itself as an organization has pulled off a consensus and all. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है.
There is no feed given that UN Security Council has not been able to forge a single non-veto resolution and all. हाँ, अब देखो जब से war हुआ है, since war, we have not seen any UN Security Council passing effective resolution against Russia-Ukraine war. क्यों? Because Russia is there and it has veto power. So if any resolution comes against Russia, Russia will block it, and this has been done. ठीक है, इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सका है, इसलिए कि इन 5 में से अगर कोई एक ने भी मना कर दिया, if either of the one says no, it's no, है ना. If one say no, it is no, है ना. That is the idea of veto. तो यही उसी की बात कर रहे हैं ना. दूसरी बात जो G20 है ना, वो सिक्योरिटी काउंसिल का काम नहीं कर सकता. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज फॉर प्रोटेक्शन, है ना, सिक्योरिटी पर्पस, बट G20 इज प्राइमरली फॉर ट्रेड. हालांकि इसमें अदर एस्पेक्ट्स कवर हो गया, जैसे थोड़ा बहुत रशिया यूक्रेन वॉर, टेररिज्म की बात एंड ऑल, then talked about the other things as well, like environment, climate change, but the main purpose of G20 is trade, business, promotion and all. जैसा West Asia Economic Corridor है ना, ये हो सकता है, it's a good thing, है ना, that's a part of G20. So WTO वगैरह का solution and all. So basically G20 is more concerned about trade, financial stability, business and all. The other flip to the success of G20 summit came from the growing support for a multilateral, multipolar world and all. A multipolar world means there is no one superpower, there are multiple superpowers. That's the idea of multipolar world, है ना. So post cold war में लोग कहते हैं कि whether it's a unipolar or bipolar or multipolar, इसमें बहुत सारे डिबेट है कि 1991 के बाद क्या unipolar हो गया, there is only one superpower US, but some say कि no, there is, I mean China is also becoming superpower, so we can call it as bipolar. Some say no, it is multipolar, multiple countries are rising, है ना, we are in an age of globalization, we cannot say there is one power and all, ठीक है. US may remain the most powerful country in the world for the possible future and all these other things being discussed, है ना. However, a decline of global power seen during Donald Trump era and all. तो Donald Trump के ज़माने में थोड़ा सा जैसे protectionism वगैरह आ गया था, है ना. Donald Trump tried to withdraw from globalization and all. So he withdrew from Iran deal and all. Paris climate agreement से ही वापस ले लिया था. Later on, when Joe Biden came to power, he decided to again join it and all. Yes, so it was in the news, है ना. China's remarkable rise and all. Since 1990s, we have seen the rise of China Belt and Road Initiative being talked about and all. तो ये सब की बात हो रही है ना. Then third pole, actually इसको हिंदू कोश हिमालयन रीजन एंड ऑल, तो इसको जो है ना थर्ड पोल कहते हैं, ये वाला रीजन, ये वाला खास के, ठीक है. मतलब एक्चुअली क्या है, आई होप यू आर अवेयर, यहाँ पर से हिमालय जाता है, यहाँ से कुनलुन शान वगैरह जाता है, ये भी माउंटेन है, और यहाँ पे और भी पाकिस्तानी बहुत सारे माउंटेन रेंज जाते हैं. तो इस रीजन को थर्ड पोल कहते हैं. जैसे ये दो पोल तो वह नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर एक बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज थर्ड पोल. इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिंदू कोश हिमालयन रीजन. तो इस रीजन को कहते हैं हिंदू कोश हिमालयन रीजन, ये वाला, ठीक है. HKH है ना, इट्स आल्सो कॉल्ड एज थर्ड पोल, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ ह्यूज ग्लेशियर्स एंड ऑल डिपॉजिट. Yes, that is what you should be knowing about it. Then we have discussed about global south and all, है ना. global south की बात की थी, this is a brand line like this, है ना. And the global north is developed nations and the global south is developing nations, है ना. So these things we have discussed it. लगभग 125 countries are there in global south, ठीक है. Okay, African Union got added in the recent Delhi declaration we have seen and all. That's what you should be knowing it. Finally, it is apparent that India's success at the G20 owes itself to the decade-old tradition of going to the middle path. Yes, देखो उन्होंने शुरू में भी मिडिल पाथ की बात की थी और यहाँ पर भी कही है, ठीक है. So that is why there is a question for you. The idea of middle path was given by Plato, गौतम बुद्ध, Socrates, अब्राहम लिंकन. बताइए तो मिडिल पाथ की बात किसने कही थी? Who talked about it? सब कोई लाइक बटन प्रेस कर दो. Everyone please press the like button. Actually, it's also called as मध्यम मार्ग. Yes, गौतम बुद्ध gave the idea of मध्यम मार्ग, ठीक है. Okay, similarly, actually Plato के student थे Aristotle. He also said golden mean is the golden rule. So the golden mean is the golden rule. तो middle path का concept उन्होंने भी दिया था, ठीक है. So neither go to the either of the extremes. बहुत ज़्यादा ना इधर extreme पे जाए ना इधर extreme पे जाए. Okay. So this idea in India, if you say, it's given by Gautam Buddha. In Greece, it was given by Aristotle. So who was the student of Plato? ठीक है. So here the right answer is B. तो मिडिल पाथ की बात जो है इन्होंने कई जगह की है. सो व्हाट एक्चुअली इंडिया इज फॉलोइंग इज एक्चुअली द पाथ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है. यस, ओके, यस, सो यू शुड बी नोइंग इट. द नेक्स्ट इज नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया कनाडा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, है ना. That this is the Hardeep Singh and the Jars killing and all, and because of which
the relation between India and Canada has actually gone down and all. So these are the things, है ना. After Canada expelled a senior Indian diplomat, India summoned Canada's High Commissioner and expelled Canada's Station Chief for Intelligence on Tuesday and all. Then Five Eyes की बात कही, they have expressed, I mean, they have intelligence sharing agreement is Five Eyes is there. ठीक है. So that these are the things we are talking about. We have already discussed. Given the support Mr. Trudeau received from his political rivals in Parliament, so in fact, his political rivals or oppositions also supported it in this manner, in this context and all. ठीक है. Canada is also a part of NATO alliance. तो Canada NATO का भी part है, Five Eyes का भी part है, G7 का भी part है. So these are the things being talked about. ठीक है. ये सब लोग डिस्कस कर लिए, एक बार अपने से पढ़ लेना. Just go through it and read it. हाँ. Yes, the government had hailed PM Modi's visit to Canada in 2015. Yes, PM Modi in 2015 visited Canada also. The first bilateral visit in India since 1973. ठीक है. So 2015 में गए थे, उस टाइम पर बहुत उम्मीद किया गया था कि we will be having good relations and all, but we have seen, especially when Trudeau and Modi meeting happened, acrimonious मतलब थोड़ा सा मामला ठीक नहीं था. Means that is what the word is used. So in G20 meeting, when the meeting happened, I think something went wrong and all. So everything was not fine here. And then of course the things started to get worse and all. So that is what you should be knowing it. Okay, the 𝗟𝗏𝗴𝗹 Water Management Authority should act. अब देखो इसमें भी इतना डिटेल नहीं जाना है, but yes, have a basic idea. पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि this is Karnataka state, this is Tamil Nadu state, right? So there's a river which goes from Karnataka to Tamil Nadu, that's called as Kaveri. It is written like this as well. And this is a dispute whether between Karnataka and Tamil Nadu, how much water should Karnataka allow through its dams and all. इसके लिए बहुत सारे cases वगैरह होता रहता है. So that is what he is talking about. Before the Supreme Court, India will reinforce the need for an early information and all. अब देखो एक पर्टिकुलर केस को इतना डिटेल में गए, उतना डिटेल नहीं जाना, बट बेसिक थिंग्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो दैट फर्स्ट इज इंटरस्टेट डिस्प्यूट. नाउ एक लाइन है, फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन. Read it and then answer it, and I'm giving you options. This is mentioned where? Article 262, 263, 131, 136. What is the right answer? बताइए. Parliament may provide the law for adjudication of any disputes or complaints with respect to the use, distribution, control of the waters. Yes, very good. Article 262A is the right answer to this question. इसके लिए इसी के अंदर तो बनाया जाता है जितना में water dispute tribunals are set up under this law. ठीक है. तो एक्चुअली ये चारों प्रोविजन है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को डील करने के लिए. एक ये हो गया, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है. देन देयर इज अनदर रिकमेंडेशन, इंटर स्टेट काउंसिल, जिसमें एक्चुअली डिफरेंट स्टेट्स एंड द सेंटर कम्स. हियर आल्सो डिस्कशन कैन हैपन. 131 के अंदर पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट वेयर स्टेट वर्सेस स्टेट जो केस होता है बिटवीन टू स्टेट्स, इट गोज इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131. और एक स्पेशल लीव पिटिशन होता है, इसके अंडर भी जा सकते हैं 136 यूज करके भी. सो दीज आर 4 वेज where actually the solution is done. सबसे बेस्ट आई थिंक ये वाला माना जाता है इंटर स्टेट काउंसिल के जरिए. ठीक है. तो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. ओके, देयर इज नथिंग सच इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड ऑल. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है पर्टिकुलर केस के बारे में. सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल अबाउट इट. इट्स अ पर्टिकुलर केस एंड गोइंग वेरी मच इन डिटेल, बट जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया. नाउ एशियन जायंट्स इंडिया यूज द क्रिकेट एशिया कप एज अ प्रिपरेटरी प्लेटफॉर्म. शायद आपको पता होगा. यस, we have won Asia Cup और बहुत कम रन पर शायद श्रीलंका ऑल आउट हो गई. एंड आई थिंक मोहम्मद सिराज वर्क वेल, है ना. 6 for 21. He took 6 wickets, 21 runs, right? And I think he took 4 wickets in 1 over. I have heard it. Although I do not watch cricket nowadays, but yes, the basic idea I have. So I think you should be knowing about these things, cricket and all. ठीक है. तो इसमें कुछ चीजें आपको थोड़ा सा देख लेना जा करके. फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, या मैन ऑफ द मैच इसको कहते हैं, एंड मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, एक बार देख लेना. ठीक है. ये सब चीज मे बी दे कैन आस्क कहाँ पे हुआ था. आई मीन लोकेशन, वेन्यू, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. एशिया कप. सो यू शुड बी नोइंग. यस, इंडिया इज द 8th टाइटल विनर. गुड, वेरी गुड. नंबर ऑफ द. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है. श्रीलंका में हुआ ना प्रेमदासा स्टेडियम एंड ऑल, दैट इज व्हाट. ये सब तो आप लोगों को पता होगा. इसमें हम क्या डिटेल में जाए. आई गेस you are aware of these things and all more than me. You know about these cricket things and all. Okay, so yes, लेकिन एक बार ये सब प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये सब देख लेना. ठीक है. So these are the things you should be knowing about it. Now NASA shifts UFO debate for sensationalism to science and all. हाँ, देखो UFO एक चीज होती है, इसको कहते हैं UFO.
मतलब वी कॉल इट एज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. मतलब एक्चुअली वेदर इट इज ट्रू और नॉट, दिस इज डिबेटेबल. मतलब एक्चुअली फिल्म्स वगैरह में दिखाया जाता है ना, फिल्म्स में या कार्टून में, सीरियल्स में, मतलब ये ऐसे कहा जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट दिस इज नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट, दिस इज फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, कोई और प्लैनेट से है, इसके अंदर से एलियन निकलेगा. हैव यू हर्ड दीस टाइप्स ऑफ थिंग्स? सो दिस इज कॉल्ड एज यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. अब लोग कहते हैं कि ये मिथ है, देयर इज नो सच थिंग. सम पीपल से नो, इट्स अ रियलिटी. ठीक है, वी हैव सीन इट एंड ऑल. अब सही है कि नहीं पता नहीं. सो लास्ट वीक लॉ मेकर्स इन द कांग्रेस, मैक्सिकन कांग्रेस, हर्ड टेस्टिमनीज फ्रॉम इंडिविजुअल्स सजेस्टिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब ऑफ कोर्स दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस और पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्थ. यानी अर्थ के बाहर भी लोग रहते हैं, हो सकता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, कहीं और रहते हो लोग. सो दैट इज कॉल्ड एज एलियन. यस, इका यहाँ पर ये इनके फॉसिल भी पता नहीं कहाँ से मिली, आई डोंट नो अबाउट इट, प्लीज चेक इट. सो फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट इट. सो दे आर सेइंग कि हाँ, मतलब इसी की बात हो रही है कि देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमंस, या जो भी कह लो, ह्यूमंस कहेंगे, क्या कहेंगे, आई डोंट नो, बट एलियंस जनरली वी कॉल इट. सो जस्ट गो एंड रीड इट कि क्या चल रहा है ये सब, है ना, जस्ट हैव एन आइडिया. यूएफओ वगैरह बस बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या होता है ना. हाँ, ये यही सब बात हो रही थी. हाँ, यस प्रांजलि, कि ये जो मम्मी है ये रियल में एलियन का है, एंड ऑल्सो नीड टू हैव सम रिसर्च ऑन इट, है ना, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा ना. तो ज्यादातर यूएफओ जो वगैरह यूएस वगैरह में देखा गया है, इतना सारा देखा गया है, कनाडा में इतना सा, यूके में इतना सा, इंडिया में थोड़ा सा, है ना, 10 में इतना सा. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है, अब उसमें तो कंफ्यूजन भी नहीं कि यूएफओ था, ये क्या था, कुछ और होगा, ड्रोन होगा, आप लोग समझ गए कि यूएफओ है, ये भी तो हो सकता है ना. सो वी कैन नॉट से विद श्योरिटी. ठीक है, सो दीस आर सम ऑफ द चार्ट्स, तुमको इतना याद नहीं रखना है, बट जस्ट हैव एन आइडिया. Simultaneous poll, do states have a say? अब देखो इसमें क्या होता है, this is actually when the simultaneous poll or one nation one election is done, it needs amendment under which article? कौन से आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करना होगा? प्लीज टेल मी which article talks about amendment, constitutional amendment? Okay, so basically that is what they are talking about, that a committee headed by former president of India has been set up in this regard, है ना, one nation one election committee and all. Article 368 governs the process of amending the constitution. Constitutional amendment can take place through 3 different procedure, है ना. एक सिंपल मेजोरिटी से होता है, जैसे आर्टिकल 3 के अंदर जब स्टेट चेंज होता है. एक स्पेशल मेजोरिटी से होता है, and another is called as special majority plus ratification of half of states. Ratification of half of states when स्टेट से कब परमिशन लिया था? व्हेन द फेडरल स्ट्रक्चर इज गेटिंग अफेक्टेड, व्हेन द स्टेट्स आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड. यस, आर्टिकल 368 के अंदर ये सारा मेंशन्ड है. यस, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो यहाँ पे जो है, डज इट रिक्वायर स्टेट रैटिफिकेशन? यस, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो पूरे स्टेट्स में भी तो इफेक्ट करेगा. इट मींस इट इज अफेक्टिंग द फेडरल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. सो इन दिस केस half of the state's legislature, half of state legislature should also pass a bill in this regard. ठीक है, that is what you should be knowing about it, है ना. For instance, the 101st amendment which introduced GST was ratified by more than half of the states. Yes, this 101st amendment था GST का, उसको half of the states से ज्यादा को ratify करना पड़ा. Yes, why? Because of course, because of it was affecting the state or federal structure also. Similarly, when we are talking about one nation one election, ये जो है स्टेट को असर पड़ेगा. इसमें लिखा हुआ 368 में क्लियरली कि किस किस केस में फेडरल स्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इफ द पावर, इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्रोविजन रिगार्डिंग यूनियन जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड ऑल, है ना. सो दीज आर द थिंग्स, इफ दीज आर द थिंग्स गेटिंग अफेक्टेड, देन states legislatures permission should be required. Half of the states, so we are having 28 states, so if 14 states will support it, the bill will be considered as passed. First, it needs to be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha with special majority. Then half of the states needs to ratify it with simple majority. यहाँ पे simple majority चाहिए होता है. ठीक है. Okay, so these are the things being talked about. ठीक है. So Congress claims reservation bill as its own bats for sub quota for OBCs and all. अब देखो यहाँ पे क्या है, reservation bill is for 33% reservation bill for women is there, है ना. Now इसमें ये बताया गया है कि although the bill is here and the bill will be passed maybe, but it will be implemented only after 2026 delimitation होगा, है ना. अभी जो 2021 का census it is yet to be done. Once the census is done, after that maybe there will be change of constituency after 2026. उसके बाद implement किया जाएगा. ठीक है, even if the bill is passed today. ठीक है, that is what we should be knowing it. हाँ, currently we are having 14% MPs around, है ना, 14.39 something, है ना. A world average is 24.5 or 25% समझ लो, is around world average. हाँ.
ना अब इसमें ये है कि कुछ लोगों ने डिमांड, दोज हु आर अपोजिंग इट, दे आर सेइंग कि सब कोटा फॉर ओबीसीज आर देयर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप 543 तो हम टोटल 100 मान लेते हैं, मान लो। अच्छा 543 के निकालो 33% कितना होगा 1/3, so it will be 3 1 3, 3 8 24, 3 1 181. Okay, now so they are demanding कि out of 543 181 women should be there. इस 181 women में से so those who are demanding it कि इसमें से कुछ seats SC ST and OBCs should be reserved for them. Okay, that is what this is on his demand. Bats for sub quota for OBC. Sub quota मतलब उसी रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन इसको कहते हैं। ये जो 181 जो आई 1/3 महिला, उसके अंदर कुछ एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ ओबीसी के लिए भी जगह होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट द अपोजिशन पार्टीज हैव डिमांडेड। ठीक है, कांग्रेस हैज डिमांडेड। ठीक है, ये सब बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन का, इसको पढ़ लीजिएगा, इसी बेसिस पर है। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, है ना। ओके, so इसको रीड कर लीजिएगा because these are the things coming in the news, है ना। Just have an idea. This is the test series, we are running it. Please attempt all the test series, है ना, that would be very beneficial for you. And this is the UG comprehensive course. This is for the next year, जो लोग next year तैयारी करें, for them this is the course. You can call on this number 9538895678 पे कॉल कर सकते हो। So this is all about today's class. Download our app, go to CLAT section, 3-day free trial is also given. So please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.